Good afternoon, class. क्या हुआ था लास्ट क्लास में? तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर फिर से बढ़ेंगे एंड द कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ डिमांड। पॉइंट्स लिखने हैं उसके ऊपर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिमांड इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड फॉर द प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? चल आगे करो, खड़े हो जाओ। प्रीवियस क्लास में नहीं आए थे। डिमांड क्या है? वांट डिमांड है। रॉबिन्स का डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स में? तुम्ही से पूछ रहा है जी, क्या डेफिनेशन है? क्या? अच्छा, और कॉपी कहाँ है देखें? सर कॉपी कहाँ है? हम ये बोले तुमको नहीं समझ रहा था क्लास में? तो उसमें लिखना है, फिर किसमें लिखना है? हैं? बोल नहीं रहे हो? लिख लेंगे। क्यों अभी तक हुआ क्यों नहीं? क्या करोगे उससे मतलब नहीं है, अभी तक क्यों नहीं हुआ है? लास्ट क्लास में कुछ हम लिखवाए थे क्लास में? जब लास्ट क्लास में तुम नहीं आए थे तो तुम बैठ के लिख रहे थे। जब हम लास्ट क्लास में नहीं आए थे तो मेरा छूट गया, तो हम लिख ले थोड़ा सा। तुम लिखे क्या? ऐ, इधर देखो इधर। कुछ पूछ रहे तुमसे हम सब? काहे नहीं लिखा अभी तक? क्यों नहीं लिखा? क्या कर रहे थे? बतिया रहे थे यहाँ पे खड़ा होके बैठ के? बोलता नहीं है? कहाँ है कॉपी तुम्हारा? ये यही कॉपी है?
समझ में नहीं आता कि फेयर कॉपी करना है? सुने थे तुम क्लास में? डिड यू लिसन? देन वेयर इज द फेयर कॉपी? जिसके पास फेयर कॉपी नहीं है खड़े हो जाओ जी। जिसके पास फेयर कॉपी नहीं है खड़े हो जाओ। क्यों नहीं है फेयर कॉपी? क्यों नहीं है फेयर कॉपी? क्यों नहीं बनाए? क्लास करता नहीं है क्या तुम? तो फिर अरे बनाए नहीं, हम पूछ रहे क्यों नहीं किए? बनाए थे तो पूरा नहीं बना। लाए हो कॉपी अभी? क्यों लेके आए? हमको क्या पता कि तुम बनाया कि नहीं बनाया? हकाने का काम खोजते हो क्या जी तुम लोग? चाबुक रखा जाए क्या? एक ठो आदमी बहाल किया जाए क्या तुम लोग के लिए? मतलब सब एक साथ बैठे हो तीनों का तीनों? तुम्हारा कॉपी कहाँ है जी? लाए हो फिर कॉपी? क्यों नहीं लेके आए हो? फेयर कॉपी अभी क्यों नहीं लेके आए? उसके बाद से तुम्हारा क्लास नहीं हुआ क्या यहाँ पे? तुम कॉलेज नहीं आते थे क्या? मतलब क्या एक्सक्यूज दे रहे हो तुम लोग? मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? बच्चा वाला काम कर रहे हो। क्या जी बालक कहाँ है कॉपी? कब लियो एडमिशन? बैठो। तुम्हारा हम कैसे फिर बतिया रहा है? सुधरेगा नहीं तुम दोनों क्या? क्या हम कैसे मान ले कि बना हुआ है? अरे स्पेलिंग मिस्टेक क्या? इकोनॉमिक्स है कि अंग्रेजी पढ़ रहे हो जी? और कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक? क्या है, तुम्हारा क्या स्थिति है? कॉपी क्यों नहीं फेयर हुआ? तो तुम बोले हमको कि सर मेरे पास नोट्स नहीं है, या तुम क्लास में मांगे है? तुम किससे मांगे थे कॉपी? क्या कॉपी क्यों नहीं कंप्लीट है? कितनी बार बोले हैं क्लास में?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा होल्ड। एकदम क्लियर कट मैसेज है। फेयर कॉपी लेके आओ, क्लास में अटेंड करो, और नहीं तो क्लास के बाहर। खाली जिम्मेदारी कॉलेज और संस्था और शिक्षक की नहीं है। अपनी जिम्मेदारी समझो और पढ़ो, नहीं तो फिर दिक्कत है। वो सरकारी कॉलेज नहीं है कि जब मन किया मुंह उठा के आ गए, जैसे मन किया वैसे काम कर रहे, नहीं चलेगा ऐसे। और एक बार जब बोल दिया जाए वो काम फॉलो होना चाहिए, दोबारा बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और सैटरडे है, ट्यूसडे को मेरा क्लास होगा, ट्यूसडे को कॉपी चाहिए। बैठ जाओ। और कोई रफ और कोई फेयर नहीं, एक ही कॉपी लेके आओ और उसको क्लास में लिखो। नेक्स्ट एक हेडिंग दे दो, लॉ ऑफ डिमांड।
जिनका भी कैमरा ऑफ है, जो भी लोग हैं उसको मैं बाहर कर रहा हूं। जिनका भी कैमरा ऑफ है सारे लोग बाहर जा रहे हैं। विकास यादव, तो पिछले बार भी तुम्हारे साथ ऐसा ही था। विकास तुम सुन पा रहे हो मुझे? रोल नंबर 42, रोल नंबर 42, रोल नंबर 42, आर यू लिस्टिंग? कम ही बच्चा रहेगा, ज्यादा अच्छा है ऐसे भी। रोल नंबर 13 प्रिंस, रोल नंबर 13 प्रिंस, कैमरे को ऑन कर लो। सुन पा रहे हो तो कैमरे को ऑन कर लो। एक हेडिंग दे दो, लॉ ऑफ डिमांड, पॉइंट वाइज देके लिखना। लॉ ऑफ डिमांड इज, पहला पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमांड इज one of the most important microeconomic laws, micro, M-I-C-R-O, microeconomic laws, full stop. Next point, this law establishes this law establishes an inverse functional relationship, an inverse functional relationship, inverse, I-N-V-E-R-S-E, inverse functional relationship between price of the product and its quantity demanded, and its quantity demanded. Full stop. उसी में लिखना है, in other words, the variables of price and its quantity demand, price and its quantity demand move in opposite direction,
move in opposite direction. Full stop. Next point. The law of demand is based upon certain assumptions. Is based upon certain assumptions. ASSUMPTIONS, assumptions. हाइफन दे दीजिए, नीचे लिखिए ABC. नंबर ए, price of substitute and complementary goods will remain constant. Price of substitute goods and complementary goods will remain constant. Full stop. सारे स्टूडेंट सबसे पहले मास्क लगा लीजिए और मास्क के साथ कोई लापरवाही नहीं कीजिए. सारे स्टूडेंट्स मास्क लगा लीजिए क्योंकि हम लोगों के लिए क्लास में मास्क लगा के पढ़ाना संभव नहीं है. Next point number B. Consumers level of income, consumers में apostrophe s, consumers level of income will also not change. Consumers level of income will also not change. Next point number C. The taste and preference of the consumers will also remain the same. Will also remain the same. Next point number D. Other factors like size of the population, comma, composition of the population, and distribution of income will also not change. And distribution of income will also not change.
आगे लिखिए, जो मेन पॉइंट लिख रहे थे वो मेन पॉइंट में आइएगा। इस पॉइंट का ABCD था, जो मेन पॉइंट में नंबरिंग दे रहे थे उस पॉइंट में नंबरिंग देके लिखिएगा आगे। assuming assuming all other factors affecting demand except price of the product to remain constant comma at a given time and place comma the law of demand states that STATES states that comma inverted comma start कीजिएगा, higher is the price lower is the quantity demanded. Higher is the price, lower is the quantity demanded, and vice versa. VICE छोटा सा dash VERSA and vice versa. Vice versa मतलब opposite. That is I.E. That is, lower is the price, higher is the quantity demanded. Lower is the price, higher is the quantity demanded. Full stop, inverted comma close. Next point. The law of demand is a qualitative concept. Qualitative, QUALITATIVE, qualitative concept is a qualitative concept because it only shows that there is change in quantity demand. It only shows that there is change in quantity demand, comma, but by how much? Is not shown by law of demand. By how much? But by how much? But by how much is not shown by law of demand. But by how much is not shown by law of demand. Full stop. Next point लिखिएगा.
law of demand, law of demand also establishes a cause and effect relationship, also establishes a cause, a अलग है, cause अलग है, cause and effect relationship between price of the product and its quantity demand. Full stop. Changes in the price is the cause. Changes in the price is the cause, comma, whereas changes in quantity demand, is the effect. Whereas changes in quantity demand is the effect. Full stop. एक बार इन सबको पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं समझा दे रहा हूं. You have got only 4 to 5 minutes with you. Go through all the points, फिर मैं इसको समझा रहा हूं. देखिए जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, कहा यह जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक लॉज. इससे इंपॉर्टेंट कोई और लॉ शायद इकोनॉमिक्स पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे खास तौर पे आपको नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये एक जनरल कंज्यूमर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है. It reflects what? The general behavior of the consumer. It is very closely associated with the day-to-day life of a consumer. How he behaves. What is the buying pattern of a consumer? What are the reactions and how much is the reaction of a consumer towards changes in price of the product? So this law is very important. And above all, it's a microeconomic law because it is related to only one consumer. It is related to understanding the behavior of a consumer. Okay, anyways, moving ahead. The law of demand establishes a very important functional relationship between price of the product and its quantity demand. Between price of the product and its quantity demand. Even more important is
that this functional relationship is inverse in nature. Inverse means opposite. I made you write down that the two variables move in opposite directions. The two variables move in opposite directions. Now, once you are saying that the two variables are moving in opposite direction, what does this mean? It means that if the price of the product is going up, you will experience that the quantity demanded for the product is coming down. And conversely, if you are seeing that the price of the product is falling, its quantity demanded is going up. Therefore, the movement of the direction of the two variables are opposite to each other. They are moving in opposite direction. Point number 3 says, once you are talking or studying about the law of demand, or say for that matter, any given law in economics, majority of the law is based or are based upon certain assumptions. If you don't assume certain things, you can't expect the laws of economics to hold good, right? What are the assumptions upon which the law of demand is based? Law of demand is based upon certain assumptions which you wrote down. I could explain it with the help of a demand function. Previously, we wrote a demand function that QDX is the function of PX, PR, Y, T, and U. These are all factors which are supposed to affect the demand for the product. That is price of the product itself, price of the related product. Related product means substitute goods and complementary goods. Y stands for level of income, T stands for taste and preference, and U stands for other factors. If you want to hold good the law of demand, the law of demand is based upon assumptions. What are those assumptions? You need to assume all these factors to be constant. All these factors, that is, price of substitute and complementary goods will not change. The consumer level of income is also not going to change. The taste and preference of yours will also not change. And other factors relating to size of the population, composition of the population, the distribution of income is also not going to change. If any of these variables change, if any of these variables change, you would not see the application of the law of demand. You will not see the application of the law of demand. I'm giving a very classic example. Suppose if the price of the product rises by say 10%. If the price of the product rises by how much? By 10%. You are expecting, according to law of demand, that the quantity demand for that product is going to fall, isn't it? But at the same time, if the price of the product has gone up, your level of income has also increased by 10%. Your income has also increased by 10%. Now, are you going to reduce your demand even if the price has gone up? The answer is no, because that increase in price has been compensated by the increase in the level of income. Therefore, if you want to hold good the law of demand, it is imperative to assume that all other factors except price will remain constant or unchanged, right? Another important point which you wrote down was, what is law of demand? You need to write certain things, assuming all other factors except price of the product to remain constant at a given time and place. What the law of demand states? Law of demand states that higher is the price, lower is the quantity demanded, and vice versa. That is, lower is the price, higher is the quantity demanded, isn't it? So now we are going to write two important things, or we have not right, we have written two important things. One is that law of demand is qualitative in nature. Law of demand is what? Qualitative in nature. Now, what does this qualitative aspect means? This qualitative aspect simply means that the law of demand is only showing that there is a change in demand as a result of change in price. Law of demand is saying that the quantity demand is going to change as a result of change in price. As a result of change in price, the quantity demand is going to change. But by how much the law of demand is going, by how much the demand is going to change is not shown by law of demand. लॉ ऑफ डिमांड ये जरूर बताता कि प्राइस के बढ़ने और घटने से क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, चेंजेस होगा.
लेकिन कितने से होगा ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। अब चूंकि वो बताता नहीं है कि कितने से चेंज होगा, तो कितना कहने का मतलब वो क्वांटिटेटिव हो गया। क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। वो क्वालिटेटिव नहीं हुआ। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली मेजरमेंट करके नहीं देता कि कितने से चेंज हो रहा, वो सिर्फ बताता है कि ठीक है, प्राइस चेंज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंजेस होगा। इसलिए इसको हम लोग सिर्फ क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बताता है, ये उस क्वालिटी को एक्सप्रेस या क्वांटिफाई नहीं करता। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। फाइनली जो हम लोगों ने पॉइंट लिखा, वो पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हुआ? कॉज की हिंदी होती है कारण और इफेक्ट की हिंदी होती है प्रभाव। यानी कि ये कारण और प्रभाव के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, एक वेरिएबल है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का, दूसरा वेरिएबल है क्वांटिटी डिमांड का। तो इसमें से कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा सिंपल हो जाएगा। सिंपल इसलिए होगा क्योंकि क्वांटिटी डिमांड तभी चेंज करेगा जब प्राइस में चेंज हो रहा है, जब प्राइस में चेंज हो रहा है। तो प्राइस में चेंज होना कॉज हो गया, और उसका इफेक्ट कहां दिखेगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज द इफेक्ट एंड चेंज इन प्राइस इज द कॉज। तो यही हम लोगों को पढ़ना था। कल के क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, आई विल बी लुकिंग इनटू योर फेयर कॉपी, और दूसरा हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व से पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, वेट फॉर द अटेंडेंस, डोंट गो अवे।